Okay, a very warm good afternoon to all of you dear students, and welcome to this discussion on the first test that you had on world history. This is the freedom module, in which we are going to have a series of tests on different parts of the syllabus so that your preparation gets a decisive edge. During the course of civil services preparation, guys, you know very well that mains is the most crucial stage, and for scoring well in mains, you need to be exam ready. We spend a lot of time in gathering a lot of content, information, facts, and a lot of stuff from here and there. But unless and until you have the skill of justifying the demand of the question, till then, all of that information is not going to fetch you the result. So it requires intense practice to write down answers, and especially in the given time frame. And therefore, this very meticulously designed program for enhancing your answer writing skills. Over the course of next several weeks, we are going to hold discussions regarding these tests. Your papers will be assessed, double checked, moderated by senior faculties also, so that you get timely and precise feedback regarding how you can improve your answer writing content. And don't worry guys, everybody starts at a certain level and we have to reach a certain stage. It's a journey, it's a process that everybody can do. Starting points will be different. Some may be at a more advanced stage, while some may be at a more preliminary stage. It doesn't matter where you start. What is important is that you start in the first place. World history, I have a lot of familiar faces in the class. And in the class, we have discussed a topic called as the Long March, when we saw the Chinese Revolution. I hope you remember that. There's a very famous saying about that long march. All long marches begin with small steps. So this is your beginning your journey of giving your mains preparation a decisive edge over the competition. So you have already written the test of world history and Indian society. And today I will be engaging a discussion regarding the world history part, whereas my other colleague will discuss with you the Indian society part tomorrow. Okay. Now, before we actually get into the discussion of the questions, let me very quickly just encapsulate for you what are the important things that you need to remember when you're writing answers. Okay. The first thing that you need to remember when you cite the question is that you have to understand the scope of the question very clearly. And this is where 80% of the students, especially beginners, make a big mistake. Okay. See, guys, every year the competition is increasing. All the aspirants are putting in their best, right, to perform well in the main examination. And therefore, naturally, UPSC also has to test you more rigorously. And therefore, now questions are much more loaded, much more nuanced. Okay. And if you've not understood the nuance of the question, then in that case, all the content and information that you might have written is not going to fetch you more than average marks. And we are not here for the average grades, right? We are here to score exceptionally well, so that you get the service of your choice in the very next attempt. And for that, it is very critical, it is very crucial that you understand the scope of the question. That is my first suggestion to you. Now, what do I mean by scope as such? Scope, guys, is basically that field that question has demarcated for you, within which you are supposed to limit your answer. Okay? You might be knowing 10 different things about that topic, but the question might be about a niche subtopic within that topic. Okay? So you don't have to write everything that you know, okay? And you can't expect marks for that for sure. You have to stay within the scope of the question. To give you a sports-based analogy, if you're playing the game of football, and if the ball leaves the field, then in that case, it is considered as a foul. You have to stay within that field and play the game. So similarly, while writing answers also, you have to stay within the scope that has been defined in the question. Okay, that is my first point of view. After having understood the scope, the next crucial aspect is writing a crisp, brief, and precise introduction. So first point was scope. Second point is your intro. Okay. In one sentence, you must be able to hit the exact demand of the question.
While reading your answer, the examiner is going to be most focused. He'll be most curious to know whether you have understood the question in the first two sentences that you're going to write. And here you have to tell the examiner that you have understood the exact demand of the question. If here you are wayward, if here you are there and about, then the examiner feels that this person or this fellow has not got the exact demand of the question. And that can disillusion him. He may not be that attentive with your subsequent part of the answer. So it is your responsibility. Onus is on you to precisely, concisely, briefly, and sharply give the introduction of the answer. We just need one sentence or max two, not more than that. But ensure that you write a good one over there. This is the second aspect that I had to share with you. The third aspect is regarding your content, the kind of content that you bring to the answer. If you see the questions of main examination, any aspirant who's writing mains will be able to write something about almost all the questions. There will hardly be any question which will be so that big a bouncer that you just don't know anything about it. Having prepared for the exam for the last year and a half at least, you have sufficient information about a lot of things. So you can write a lot of stuff. But your content has to be sharp. It has to be precise. It has to be added with a lot of value to make your answer enticing to the examiner. If you're writing generalistic content which everybody is writing, then in that case, you're not going to fetch more than average marks. A lot of candidates make this mistake that they don't take the trouble beforehand of readying their material in such a manner that they will have sharp content for their answers. Maybe when you wrote the test, you might have experienced that yourself also. You did write the answer, but then the answer lacked that sharpness. So that content is going to be very crucial. Now, how will you get that content? As a student of management, we were taught something in our class very initially. There was a principle or an idea which said, garbage in, garbage out. Okay. The same thing is applicable to your preparation also. The kind of material that you are processing, the kind of material that you are storing, the kind of material that you are revising is what is going to be reflected later in your answers. If you have not taken the effort, the pains, to organize your notes in a structured manner, okay, based on different dimensions, with different subheadings, with emphasis on keywords, with emphasis on specific data, facts, etc., then it is near to impossible that you will be able to reflect that in the exam hall. So the effort for it is not in the exam hall. The effort is much, much before that, okay, in that preparation process. How meticulously you're going to go about doing that. Are you getting this aspect, guys? So working on your content while you prepare notes, when you revise, all of that is going to be very crucial. Next aspect that is very important for answer writing is the mandate that the question gives you. Different faculties use different words for it. I call it the mandate. Some will tell you keyword, some will use tail word, different words are used. What is this mandate? Mandate is basically critically analyze, evaluate, discuss, examine, throw light on, so on and so forth. These are different tail words that qualify the question that UPSC has given you. And understanding the import of these tail words is very crucial, because based on that, the treatment of your content is going to change. Okay? How you deal a discuss-based question is going to be very different from how you're going to discuss, how you're going to write a critically examined question. So understanding these keywords and accordingly modifying your content is going to be crucial to justify the demand of the question. But just to give you one more analogy so that my point is clear to you. A Maggie 2 minutes noodle, a simple analogy, a 2 minutes noodle or Maggie can be prepared in 10,000 different ways. It still remains the Maggie, but the way you prepare it, the treatment that you give to it is going to completely change the taste of it. So similarly, your content is the basic input of noodles, but that keyword is that treatment. Okay? That is what is going to change the taste of your answer. Did you get that?
Okay? And if UPSC is asking you a particular taste, then you are supposed to provide that taste only. Okay? That is why understanding these mandate words or tail words or keywords, whatever you like to call them, is very important. We have a complete list. I believe you might have been given that in the classroom. Do refer to that list and try to understand what exactly the expectations are. In due course of our discussions and assessments also, you will be able to further understand what exactly the import of these words is. Okay. Next aspect regarding your answer writing is your presentation. Your answer has to be visibly appealing. If the introduction is standing out, it has good subheadings, they are underlined, keywords are underlined, you have some maps in place, you have put in some diagrams, flow charts, all of these things add a lot of visible appeal to your answer. Okay. There was a topper 2 years ago who had improved his rank by more than 600. I mean, he was selected in the previous attempt, and in the following attempt, he had a big jump, quantum jump in his ranking. And he was asked, what was the difference that enabled you to jump, take such a big leap in your ranking? And he said, I did only one thing in the subsequent attempt, which was I worked on my presentation. And that presentation enabled me to increase my main score by a good 100 to 120 marks. I don't remember the exact marks, but only difference in presentation brought about such a big jump. So why should we wait for that subsequent attempt when we can do it right away? And having that sort of a presentation is going to come through practice. It has to be second nature for you, that whenever you're writing a question of history or geography, you have to bring in a map. Can you draw a world map in 12 seconds? Can you draw a map of India in 9 seconds? Are we able to do that? We need to think over it. Okay? These presentation aspects are going to be very, very crucial. Getting my point, guys? Last aspect before we start the discussion. Last aspect is regarding conclusions. Okay? Conclusion is where the examiner is, actually meeting you. Okay? This is where he comes to know what kind of a thought process you have. This is where you are going to imprint and tell that I am a candidate worthy of being an IAS officer. Here is where you show your originality of thought. See, in the answer that has gone by, there also you have scope, but then there are limitations there. Conclusion, the ground is open for you to reflect your thought process. Okay? You are a thinker, you are an original thinker, you have given a thought to things. All of those things will get reflected in the conclusion. A lot of candidates, I mean, trust me, even those who are writing mains right now, who are submitting their answers, I see a lot of candidates, 50% of the times don't even write a conclusion. They don't even bother to do that. As an examiner, I mean, as somebody who checks paper regularly, I am waiting for that part. I'm waiting to read your conclusion to know what kind of a person you are. I want to judge your personality, whether you are fit for these roles or no. And you're not even writing the conclusion. It's a big tragedy. Okay? So writing good quality conclusions that reflect your thought process is going to be very important. Okay? So these are 6 to 7 pointers that you need to remember and consciously incorporate when you write answers. Okay? चलिए, अब हम क्या करते हैं? We'll take up one question at a time and discuss how you could have attempted that question. You can relate with it. Of course, you're going to get detailed SS copies also later. Let me share the PDF on the screen with you. Yeah, please go ahead. Tell me. इंट्रोडक्शन में बोलते कि हम आंसर में क्या लिखने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते 2 लाइन में, राइट। और कंक्लूजन करने के बाद हम ऊपर क्या लिखना है वो शॉर्ट लिखना है। ओके, तो प्राइमरी बेसिक तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन डिफरेंस कैसे करना है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि इंट्रोडक्शन में तो हम एक बेस बता देते हैं कि आंसर में हम क्या बताने जा रहे हैं, उसके बारे में हमने उसको हाईलाइट कर दिया। अब कंक्लूजन में क्या लिखें? ठीक है, देखिए, एवरी फैकल्टी for this particular subject is going to tell you about this. I'll tell you for history since I teach that subject. Okay? History के अंदर में it is easy. There's a simple formula how you can write conclusion for answers of history. 2 things you need to do. 1, underline, highlight the importance of that particular topic in the course of history. And secondly, touch upon how that event or that development
has impacted the future course. Take for example, if there was a question on the revolt of 1857, you've written all the content. Towards the end, just add 2 sentences. Why this uprising is significant, mention that in 1 sentence, and then in the subsequent one, write how it is going to impact the future flow of history, how India's relations with the colonial empire changed, and how this rebellion inspired subsequent generations to fight for independence. There were a lot of learnings, right? So ये 2 चीजें बस आपको ऐड करनी है हिस्ट्री के आंसर में, whether it is Indian history or whether it is world history. This is going to be applicable everywhere. Okay? So in this manner you can do it. Got the idea? Yes, sir. So last time when I gave match, I faced major problem about completion of paper. Right. During that time, we tried to complete all paper. I could not complete the space. What is the importance of space in answer writing? Okay, see, UPSC mein, the quality of your content is going to matter more than the volume that you have put in over there. Okay? So what you can do is smartly, you have 2 pages to write a 10 marker, and you have 3 pages to write a 15 marker. Okay? So for a 10 marker, you can target to write 1 full page of course and 3/4 of the next page. Okay? And in a 15 marker, 2 pages full and half of the 3rd page. That way you will not be burdened. Okay, this is one thing. Second smart thing that you can do is bring in some diagrams, flowcharts, maps that also enables to give the feeling of that entire thing being occupied. Number 2. Okay. Number 3, if still you are not able to complete the paper, for example, then there is only one reason behind that, is that you perhaps might have not taken the effort of preparing micro notes beforehand and revising them over and over again. See, there are 2 aspects of completing the paper. One is the mechanical aspect of writing, and second is the thinking part. Okay. If thinking part is sung, then the mechanical part is very easy. Okay. As in the time given is more than sufficient. Even students, we have to write 2 essays, right? I know a lot of students who finish their essays a good 15 minutes before the time. Good 15 minutes before the time. Okay? So the mechanical part can be taken care of. The thing is that you might be taking more time to formulate your answers. And why does that happen? Because your preparation has been scattered. It is not a consolidated preparation. Instead of learning 10 things, learn 7 things, but be very thorough with them so that you can formulate those ideas very quickly. Okay? और इसके लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास में माइक्रो नोट्स जो है वो रेडी हो well beforehand. Now, I'm sure, of course, all of you are targeting the next attempt, obviously. This is the time for it, where topic-wise, you have a 3-page max micro note ready with you. Max 3 pages. Okay? And then next year after prelims, you're not going to read any new source. कुछ नया नहीं पढ़ना है. ठीक है? और बस क्या करना है? Just over and over revise those 3 pages. You have the understanding. It's just about getting that content in the nick of time. And for that, micro notes and that revision is going to be very crucial. अगर ये आपने कर लिया तो 30 seconds में आप आंसर फॉर्मुलेट कर लोगे, and the mechanical part, as I told you, is not difficult. But the idea is, since he has asked the question, I'll just add a little more to it. Okay? Something that is relevant but not directly asked for. Now, how will you go about doing this? See, ask respective faculties of each subject to give you a list of topics of that particular subject. एक list बना लीजिए, ठीक है? Make a table. Suppose say world history, my subject, for example. World history. In the class, I've told you what are the topics that we are going to cover. You have a list of all those topics in the notes. Write down those topics, and after that, make a table. Source 1, source 2, source 3. Not more than 3 sources for one topic. Okay? Take up one topic and finish off all the 3 sources. And based on all of those 3 sources, after completing all the 3 sources,
then make a 3-page का micro note of it. ठीक है? Use this freedom module that you have joined for this exercise. Okay? Prepare micro notes now. हाँ, इस प्रोसेस में अगर आपका रिवीजन कम भी हो जाता है, कोई हर्ज नहीं. We are targeting next year का means. We want to ensure that before you get into the prelims mode, you have covered all the sources in this manner and you have that micro note ready with you. Okay? Take this as an opportunity. After the prelims, then it will just be down to those papers का revision. ठीक है? बस उसको रिवाइज करना, टेस्ट लिखना, रिवाइज करना, टेस्ट लिखना, रिवाइज करना, टेस्ट लिखना. That's all. Got the idea? You still asking something? We have got model answer also, but problem is model answer are also take printed format. Can we get some model answer answer writing format? Answer as you mean handwritten type format. Okay, let's see. So understand what is exactly the meaning structure presentation, because in printing it's it gets a feel of a note sort of. Okay, it's a good suggestion. I can't assure you. I'll have to have a word. We can think about it. not more some one two. At least a few ones at least. Okay, it's a good thought. We'll certainly think about it. Thank you. Okay, shall we start then? Okay, चलिए शुरू करते हैं. Let us see the first question. Let's see the first question. The Industrial Revolution could only have taken place in England first and not in any other European country. This is the question. And the keyword or mandate given is critically evaluate. Whenever the word critically comes in, it is understood that you are supposed to give a comment. What is your view on it? And it is saying evaluate means you have been given a statement. You're not supposed to assume it right or wrong, but you have to come to a conclusion based on what information, knowledge you have about it. Okay? Let's start the answer now. How can we introduce this topic? Okay. Now, one trick that I will suggest to you for introductions is that whatever is the key aspect of the question statement, try to make that word or phrase as your very first word or phrase in the introduction. Like here we are talking about the Industrial Revolution. Okay, so directly start your introduction ka sentence with Industrial Revolution and then continue it. Now, how does that help? How does that matter? It helps to keep you focused. A lot of times you will write a lot of stuff way behind Industrial Revolution, Enlightenment, the Renaissance, Roman civilization, whatnot. So to avoid that trap, take the keyword of the question and start your introduction from that. So you are limited yourself. Okay. Okay. So the Industrial Revolution is a period as well as movement from mid-18th century in England, which saw a new modern system of producing goods emerge that involved capital, labor, and power in a factory. The following unique conditions that existed in England but were absent in European countries such as France, Austria, Prussia, etc. were responsible for it. So consciously see here in the statement, I have included other major countries at that time. Okay, Prussia, Austria, so on and so forth. So try to recollect your answer whether you touched upon this or no in your introductions. Most likely, a lot of candidates would not have. Okay? This tells the examiner that maybe you have not got the nuance. Read the question again now. What is the question saying? It says, the Industrial Revolution could have taken place in England first and not in any other European countries. Okay? So this involves a sort of a comparison. हे इंग्लंड मध्येच होऊ शकलं असतं, दुसरीकडे कुठे नाही. सो दुसरीकडे कुठे म्हणजे कुठे त्याचा जर का रेफरन्स नहीं आला, इट मीन्स दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस. गेटिंग दिस? ओके, सो इसलिए आपको क्वेश्चन का वो एस्पेक्ट नुआंस जो समझ स्कोप जो मैंने बताया ना आपको, आई होप यू आर नाउ कनेक्टिंग विद इट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स. नाउ आफ्टर दिस इज द information or content that you have. If you prepared thoroughly, then this part is not difficult. Let us still see what can be written over there. So what were some geographical factors which enabled this revolution in England? It was an island nation. Okay, island nation होने की वजह से क्या होता है? There is more of peace. Whereas बाकी सारे European countries में क्या हो रहा है? Borders are contiguous and we are in the age of empires. ठीक है? So invasions, counter invasions, warfare. We know the 30 Years' War.
We've heard a lot of rivalries between France and the German-speaking states. Right? Because of all of this, there was no peace, and since there was no peace, naturally, nobody would like to invest their hard-earned capital into such a place. Right? England being peaceful, all of that was possible over there. And since it was peaceful, the next demand of people was unlocked. You have developments of democracy in England only. It doesn't start in France, it doesn't start in Germany. Why in England? Because the primary aspect that people, citizens require, that is security, that is ensured. So Maslow's need hierarchy theory kya bolti hai? Once one level of demand is met, then the next one is unlocked. Okay, so after having that peace and security, people will now want what? Say or share in power. Okay, so glorious revolution 1688 आएगा, right? पहले का जो एरिस्टोक्रेसी था उसके पावर लिमिट होगी, राजा की पावर्स लिमिट होगी, and the rich new merchants they will get into the parliament, so laws can be formed in favor of industrial revolution, so on and so forth. Multiple things will happen. All of this would not have happened had it not been for the geography. And then being island and having crooked boundaries, okay, led to development of natural harbors. Consequently, there was a long tradition of maritime trade. So there was that excellence in that activity already. So these are all geographical factors. Natural resources, iron and coal, they have powered the industrial revolution. So Britain had those also. Coal is the fuel and iron is the most important, you can say, input, right? So these are the geographical factors. Getting my point? जितना आप structured आपके content को prepare करेंगे, उतना आपके answers वहाँ structured. Headings, subheadings, keywords याद रखिए. ठीक है? ये अगर आपके content में नहीं है तो exam में नहीं आने वाला. It cannot possibly happen over there in 7 minutes. Garbage in, garbage out. Remember that principle. So ये geographical aspect है. Shall we go to the next one? Political factors. Again, इसी से linked है. Stability, peace, glorious revolution, democratic processes, parliamentary form, state itself becomes pro-capitalist. Okay? East India Company बनी थी ना, right? East India Company में investors कौन थे? Basically, all the rich elites of England, the king, royal family, all the lords. So आप देखेंगे difference. England के अंदर में जो rich elite है, they are pro-capitalist. They are investing their money. They want to earn profits. Whereas यूरोप के अंदर में जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो अभी भी वो ठाकुर साहब वाली मेंटालिटी, जहां तक नजर जाती है हमारी जमीन में, और उसी में वो खुश हैं. लेकिन इंग्लैंड में यू सी डिफरेंस. दे वांट टू इन्वेस्ट इन ट्रेड, अर्न मोर मनी इन दैट प्रोसेस. सो दिस इज द प्रो कैपिटलिस्ट नेचर ऑफ द स्टेट. इसकी वजह से बहुत सारे लॉज पास होते हैं इंग्लैंड में, ब्रिटेन में. नेविगेशन लॉज आर पास्ड, एनक्लोजर मूवमेंट लॉज आर पास्ड. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड द प्रो कैपिटलिस्ट नेचर? अब ये है कीवर्ड प्रो कैपिटलिस्ट नेचर. ये आपने हिट किया, एग्जामिनर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू हैव टू कनेक्ट सच कीवर्ड्स इन योर माइक्रो नोट्स. गेट दिस पॉइंट? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहला इंपोर्टेड कैपिटल भांडवल पाहिजे ना. भांडवल इसका सत्तर कैसे झालं? Britain developed this capital because of long distance trade. So there was a rich merchant class who had a lot of disposable capital which he wanted to invest to earn more profit in that process. So availability of capital is crucial. Okay? Yes, no concept. Then agriculture revolution in the preceding centuries, increased food production. More food production means more population. More population means more labor plus bigger market also. These are required for any industry. You all agree with this? And we need cities for industrial revolution because factory city में ही सेटअप होगी ना, या उसके आसपास में सिटी बनेगा. सो अब गांव से लोगों को भेजना है हमको सिटी में काम करने के लिए. ये कब होगा? हिस्टोरिकल प्रोसेस में. व्हेन इट विल बी पॉसिबल, व्हेन दोस पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी, देयर फूड रिक्वायरमेंट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है? तो फूड प्रोडक्शन बढ़ना होगा, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के पास होता है. गॉट द आइडिया? ओके. एनक्लोजर मूवमेंट, I've spoken about this at length in the class. Okay, I'll not go into the technicalities. It allowed a lot of people to leave villages and go to the cities, or rather it forced migration from rural areas to urban areas. Bigger cities means more labor, cheap labor available for factories.
So these can be some of the economic factors. I've listed out many. See, the intent of the class is not to teach you the subject. Intent of the discussion is not to teach you the subject. It is to tell you how to approach questions, how to write answers. Getting this, no? So I am going to emphasize more on structure rather than every single point. तो ये हमने देखा पॉलिटिकल फैक्टर्स, उसके बाद में कुछ सोशल फैक्टर्स हमने देख सकते हैं। ब्रिटेन की सोसाइटी का नेचर मोर लिबरल नेचर ऑफ सोसाइटी, देन प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड, अप्लाइड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, they were not that much into science. Germans were into chemistry, botany, physics. ये सारी चीजें आपको वेस्ट यूरोप में दिखेंगी, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर में वो चीज आपको उतनी नहीं दिखती, because British people are more about application. How can it solve my problems today? ठीक है। So that practical bent of mind, entrepreneurial nature, all of these social qualities we can see in Britain, ठीक है। So these can be social aspects. And the best thing about history is घुमा घुमा के कितने डायमेंशंस लिखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल बताना है, इकोनॉमिक बताना है, सोशल बताना है, ज्योग्राफिकल फैक्टर आ गया तो आ गया, ठीक है। ज्यादा तो है भी नहीं ना डायमेंशंस, सो इट्स इजी। गेट माय पॉइंट। अभी कंक्लूजन थोड़ा यहाँ पर होना चाहिए था। दिस हैज बीन मर्ज्ड विद द सोशल फैक्टर्स। क्या लिख सकते हैं? Thus, when most of Europe was still steeped in medievalism and political conventions, अभी देखिए मेरे अपने वर्ड से ही, एज इन मैंने जो सोचा इसके ऊपर मैंने लिखा। अब ये जब पढ़ता है एग्जामिनर, तो उसको यहाँ पर मैं आपसे मुलाकात होती है, इंफॉर्मेशन सबके पास में, कंक्लूजन में आपसे मुलाकात, ठीक है। जब पूरा यूरोप इसमें फंसा हुआ है मिडिवलिज्म में और पॉलिटिकल कन्वर्जेंस में, तब ब्रिटेन के पास में ये सारे फैक्टर्स एक्टिव थे। इसीलिए ये चीज इंग्लैंड के अंदर में पहले होती है। और मैं अभी आपको कैसे करना, ठीक है। एक सेंटेंस ही आएगा, दो सेंटेंस आएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो आपके मार्क्स को एनहांस करेंगे, ठीक है। दैट विल इंप्रेस द एग्जामिनर। व्हाट द आइडिया? फर्स्ट क्वेश्चन आप क्रिटिकली बोला था एग्जामिन करने के लिए, तो हमने इसमें अगर ऐसा है क्या तो दूसरे कंट्री के कुछ एग्जांपल देखिए, आप रियल नहीं था प्रेजेंट, उधर का जो नेगेटिव थिंग थी वो हाईलाइट की होती तो किस तरह? हाँ, हमने इसीलिए शुरुआत के अंदर में भी वो कहा है, यहाँ पर भी टच किया है। आप बीच बीच में उसको और वीव कर सकते हैं कि फ्रांस इस वक्त में क्या हो रहा है, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। रशिया का क्या चल रहा है, रशिया अभी भी फ्यूडल सोसाइटी के अंदर में है, ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स आप वहां पर में और वैल्यू एडिशन के लिए ऐड कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर वर्ड की लिमिट ब्रीच होती है, अगर ऐसे लिखा है। हाँ, राइट। एग्जाम में हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता, राइट। तो तब कैसे कन्विंस करना है इसी। हाँ, अब अगर आप देखेंगे इसके इस आंसर को, तो इसके अंदर में वर्ड लिमिट जो है वो 275 टू 80 के आसपास में गया है। सो ऑलवेज देयर इज अ मार्जिन, जो भी है उससे अगर आप 25-30 वर्ड्स अगर आपने ज्यादा लिख लिया तो कोई हर्ज नहीं। बट आई आल्सो कंसीडर द पॉइंट that in the exam hall it is difficult to write all answers with that number of words, इसलिए मैंने जो शुरुआत में प्रैक्टिकल सजेशन आपको बताया, डिमांड जस्टिफाई हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा लास्ट का जो स्पेस है उतना आप छोड़ करके आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज डिमांड इज जस्टिफाइड ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हां, मैं कमिट हूं, ठीक है। लेट मी कंप्लीट, आपका आंसर उसी में आ जाएगा मोस्ट ऑफ। सो क्या करना है आपको, यू कैन मर्ज डिफरेंट आइडियाज इनटू अ सिंगल सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोशल फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो ये सोशल फैक्टर्स को हम एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, ब्रिटिश सोसाइटी और इंग्लिश सोसाइटी एट दैट टाइम वाज हैविंग प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड, कॉमा, possessed entrepreneurial streak and was liberal and experimenting in nature, which was required for industrial revolution। तो जो मैंने यहाँ दो तीन पॉइंट्स में आपको कहा है, वो आप एक सेंटेंस में कॉमा ऐड करके आप उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके भी आप लिख सकते हैं। दैट सर्व्स द नीड, ठीक है। जहां हमने इलैबोरेशन किया है उसको आप श्रिंक कर लीजिए। अब एक और तरीका होता है, एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ जगह पर मैं थोड़ा डिटेल में कहा होगा, आप बस ईजी डॉट कीजिए और एग्जांपल का जो कीवर्ड है वो लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हो तुम, ठीक है। सो टाइम एंड स्पेस आर ऑप्टिमाइज्ड बिकॉज़ ऑफ इट। बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the role of ideas of enlightenment in the American Revolution, ठीक है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री और फॉर दैट मैटर इवन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली, यहां पर में आप देखेंगे कि थॉट्स एंड आइडियाज आर वेरी क्रूशियल थिंग्स। व्हाटएवर मैनकाइंड हैज डन और अचीव्ड, उसके सेंटर पे कुछ आइडियाज होते हैं। वी आर इंस्पायर्ड बाय सम आइडियाज और उसकी बेसिस पे हमारे सारे एक्शंस होते हैं। So when you study or prepare history, you have to focus on these ideas.
And I'll tell you how UPSC also focuses on this. In modern India, for example, you have a section, you have a syllabus point which says important personalities. Modern India syllabus, and you see what are the questions that have been asked on personalities. गांधी जी पर पूछे, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर पे पूछे, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में पूछे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स देखोगे आप, डेलहाउसी, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन, इनके ऊपर पूछे। ये देखिए, इनकी अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशंस, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, बट व्हाई ओनली दीज? जिनका थॉट में कंट्रीब्यूशन, आइडियाज में कंट्रीब्यूशन है, यूपीएससी उनको प्रायोरिटाइज करता है। गेटिंग दिस? सो आइडियाज, थिंकर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अब यहां पर मैं देखते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड कैसी है और हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अब डिस्कस वाला क्वेश्चन है, डिस्कस इज द इजीएस्ट टाइप टू डील विद। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, अनलाइक इन critically analyze, evaluate वगैरह वगैरह, वहां पर मैं not necessary, you have to come to a sound judgment on it, but when it is discussed, the given qualifying statement is true, उस पर बस आपको चर्चा करनी है, ठीक है। The founding fathers of America were well versed with the political currents of Europe, and consequently the ideas of enlightenment are reflected prominently in the revolution as well as the state it created. Question क्या बोल रहा है? Role of ideas of enlightenment. अब एनलाइटनमेंट कहां हुआ था? यूरोप में, ब्रिटेन में थिंकर्स हैं, फ्रांस के अंदर में थिंकर्स हैं, लेकिन रेवोल्यूशन किसकी बात हो रही है? अमेरिका, ऑन द अदर साइड ऑफ अटलांटिक। क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कनेक्शन, ठीक है। सो वेयर आर वी स्टार्टिंग? फाउंडिंग फादर्स, भले से वो कॉन्टिनेंटल अमेरिकन्स हैं, लेकिन दे आर इन टच विद द पॉलिटिकल करंट्स ऑफ यूरोप एट दैट टाइम। इन्होंने हॉब्स पढ़ रखा था, लॉक पढ़ रखा था, ये सारी चीजें समझ रखी थी। Thus the idea, now we go on discussing, और हम एग्जांपल्स के जरिए से प्रूव करेंगे कि कैसे ये सही है। Thus the idea of natural rights given by John Locke is seen incorporated in the Declaration of Independence as inalienable rights. I told you that quote in the class when I discussed the topic. All men are born equal and that they are endowed by their creator with certain inalienable rights. Declaration ये कह रहा है, ठीक है। कहां से आया है आइडिया? अचानक तो नहीं ड्रॉप हुआ है ना, इट हैज सम ग्राउंडिंग। कहां से आ रहा है? फ्रॉम दिस आइडिया। दिख रहा है कनेक्शन, दिख रहा है एनलाइटनमेंट का, ओके। द बिल ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो guarantees certain important rights to American citizens. This also reflects this idea. दुनिया के इतिहास में पहली दफा एक स्टेट जो है गारंटी कर रहा है उसके सिटीजन्स को कि ये राइट्स आपके छीने नहीं जा सकते। इनएलिएनेबिलिटी दिख रही है वहां पर, दिख रही है नहीं दिख रही है? So is it not the impact of enlightenment, right? Thus, like enlightenment, the focus of revolution was also on human life. Europe में the life was church centered during medieval times. Everything revolved around religion, ठीक है। एनलाइटनमेंट ने इस अप्रोच को चेंज कर दिया। उर्दू हिंदी में या मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर में एक वर्ड आता है किबला। किबला मींस द डायरेक्शन इन व्हिच अ मुस्लिम प्रेयर्स, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा और मक्का, ठीक है। सो दैट इज द ओरिएंटेशन। मिडिवल टाइम्स का किबला या ओरिएंटेशन क्या था? गॉड, रिलीजन, चर्च। एनलाइटनमेंट ने उसको शिफ्ट किया, और कहां शिफ्ट किया उसको? ह्यूमन लाइफ। हरी बात समझ में आपको? सो वो फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ दिख रहा है कि नहीं आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? When they are talking about all of these things, they are prioritizing that human life. कि प्रत्येक आयुष्य जो है तो सीक्रेट है, एवरी पर्सनैलिटी इज इंपॉर्टेंट, उसका फुलेस्ट फ्लरिश होना चाहिए। तो ये फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ, दैट इज आल्सो अ गिफ्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। यू एग्री विद दिस और नो? यस, नो, आंसर? ओके, देन फर्दर रूसो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर, प्रिंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स, ओके, क्या कहता है रूसो? He gives an idea of social contract which is different from previous social contracts, and in his social contract consent of the governed, sammati, is central ये social contract के अंदर में, ठीक है। और वही चीज अमेरिकन्स कहते हैं ना, social contract में consent मतलब क्या? जो राज कर रहे हैं, people who are ruling, their rule is based on consent of those they are ruling.
अमेरिका में क्या हो गया था? British government had lost that consent because of many steps and measures that they took. Consent was lost. Social contract is breached. Okay. So if the social contract is breached by one party, the other party is free to do what they want to then. Agree करते हैं आप इससे? अगर आपने किसी के साथ में करार किया है, दूसरी पार्टी ने करार तोड़ दिया, तो उसके बाद आप बाउंड है क्या उस करार से? वन वे नहीं हो सकता ना ये ट्रॉफिक. ठीक है? It's a two-way process. So consequently, they arrogate to themselves the right to rebel. So ये induced है from what Rousseau is saying. Can you see the linkage of enlightenment here? और भी चीजें बोल सकते हैं. Montesquieu's idea of separation of power. Enlightenment का thought है. Power अगर concentrated होगा एक ही जगह पर में, absolutism होगा, तो क्या होगा? लोगों के rights का हनन होना ही होना है. ठीक है? So we want that power to be divided into three. Executive, legislative, judiciary, a fine balance between all of these checks and balance systems. All of that idea of Montesquieu, इसी पे तो based है पूरा अमेरिकन का system. ठीक है? They have completely independent executive, legislature, judiciary. Neither of them is supreme. ठीक है? वो चीज रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं यहाँ पर? ब्रिटेन में भी देखिए, ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वैसे अगर आप देखिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ ना. ठीक है? लेकिन यहाँ पर में क्या हो रहा है? कंप्लीट independence, complete विभक्त पड़ा है. Is this not an impact of enlightenment? अचानक से अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स को सपना नहीं आया ना कि ऐसा हम स्टेट बनाएं. वो तो आइडियाज पहले आती हैं और फिर उसके इंस्टीट्यूशंस बाद में मटेरियलाइज होते हैं. So is this a linkage? ऐसे और भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर में एग्जांपल्स के तौर पे दी, which all show कि ये रेवोल्यूशन और उसने बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, इसके आइडियाज कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट से ही इंस्पायर्ड है. ये चीज क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने की. Got this idea? Okay, this was the second question. Okay, I hope you are getting कि मैं हर एक word नहीं पढ़ रहा हूँ, which is not required. I'm trying to give you the approach. चलिए, let's see the next question. The Declaration of Rights of Man marks the transition of France from absolute monarchy to a constitutional monarchy. ये थोड़ा tricky question है. अब देखिए 10 questions हैं, तो 5 to 6 will be, gettable. 1 or 2 will be very challenging and 2 will be say moderate level. ये तो होना ही है. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, इसको हम देखते. Declaration of Rights of Man and Citizen, the fundamental document of the French Revolution, was the first step towards writing of a constitution in France. When the revolution starts, people of France are actually tired of the earlier system, जिसको वो ancient regime है. कैसा है वो ancient regime? It is based on absolute monarchy, which is supported by privileged classes. ठीक है? अब इनका ये जो absolutism है, इस absolutism को खत्म करना है. We have had enough of it. ठीक है? इसके लिए revolution की शुरुआत होती है. ठीक है? अब जब ये start कर रहे हैं, तो there has to be a clear-cut vision as to what we want to achieve in this process. And that vision, कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले हम अपना target define करते हैं. अगर टारगेट ही डिफाइन नहीं होगा तो सारी एक्टिविटी फेल हो जाएगी. ठीक है? सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टारगेट है, दैट इज डिफाइंड इन दिस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन. जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी, उससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया था. दैट गेव द विजन ऑफ द प्रोसेस. ठीक है? और वही चीज लार्जली हमारे प्रीएम्बल में फिर हमने इंक्लूड की. वो कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन स्टेट का विजन देता है. ठीक है? सो वैसे ही इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का विजन कौन देता है? ये डिक्लेरेशन देता है. ठीक है? देन वी डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम द डिक्लेरेशन कि क्या-क्या इसके अंदर में बोला गया. एंड क्लियरली इट इज गोइंग अवे फ्रॉम रॉयल एब्सोल्यूटिज्म. पॉइंट्स देखिए आप इसके अंदर में क्या-क्या बोले हैं. अब मैंने थोड़ा सा मार्क करते हुए इसको अलग किया था, लेकिन वो बुलेट्स जो है वो सेम हो गए, इसलिए तो आपको लग रहा है कि सारे सेम पॉइंट्स हैं. बट हियर दीस पॉइंट्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ द Declaration of Rights of Man and Citizen. क्या पॉइंट्स है देखिए यहाँ पर. Men are born and remain free and equal in rights that include liberty, property, security, and resistance to oppression. A men are born and remain free and equal. Does that not militate against मेरा वचन ही है शासन, शिवगामी, absolutism? ठीक है? So it is going away from that absolute monarchy. Sovereignty and law should come from the general will. आमी मंडल तो शब्द नहीं. ठीक है? The king cannot say this. General will, जनता का जो
फैसला है, हित है, वो असली सॉवरेनिटी रखता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ रिलीजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। अब देखिए मल्टीपल पॉइंट्स थे जो आप पूछ रहे थे, मैंने उसको क्लब किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। पहले क्या था, प्रिविलेज क्लासेस का ट्रीटमेंट अलग था, राइट? दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस, दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मेनी ऑफ द फंक्शंस, दे हैड रिजर्वेशन इन ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। ये इनइक्वालिटी हो गई ना, ये हटा करके इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ ये कहता है। अब इसमें ये सब कुछ आ गया, ओके, वी हैव लेस स्पेस, सो ऐसे चीजें हमको लिखना है, ऐसे कीवर्ड्स लिखना है which will include a lot of things. Taxes should be paid by all citizens in accordance with their means. Progressive form of taxation. पहले क्या था, privileged classes did not pay any tax, only the third estate paid taxes. These are all provisions of the rights of man and the citizen. आरी बात समझ में आपको? So can you see that this is going away from absolute monarchy? ये तो पक्का है कि नहीं है? ठीक है, बट यहाँ पे मैं कैच क्या है, दिस वन कैच होता है, द कैच इज इट टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसके लिए अगर आपने वो चेन ऑफ इवेंट्स को अच्छे से समझा होगा तो आप लास्ट पॉइंट में उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है? इनिशियली ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, बिफोर वी एंटर द रेडिकल फेज अंडर मैक्सिमिलियन इन 1793, उससे पहले रेवोल्यूशन चाहता था या रेवोल्यूशनरीज चाहते थे ब्रिटेन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है? आफ्टर मैक्सिमिलियन टेक्स ओवर and especially in the context of attempt of Louis to flee to Austria, okay? They decide that no, he is a threat, he is a danger, we need to establish a republic. ये बात की डेवलपमेंट है। पहला एम क्या था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो लास्ट में आपको कमेंट के अंदर में लेकर के, तो इससे क्या होगा, आपने फिर क्वेश्चन की दोनों साइड्स को जस्टिफाई किया। क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, राइट? दोनों पार्ट्स को जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है, दैट विल कम इन हियर टुवर्ड्स द एंड। Sir, in some notes, it was said that while drafting that rights of man, they also drafted a provisional constitution. There are three constitutions that they drafted: 1791, 1793, and 1795. तो पहला जब जैसे ये राइट्स ऑफ मैन ये ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आइडिया। बाद में सेकंड जो सब्सिक्वेंट आता है 1793 वाला, उस वक्त तक लुई का सर जो है वो कलम कर दिया था, एंड देन नेचुरली दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, ठीक है? सो इट हैज, एंड इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन दिस सेम डिक्लेरेशन वाज द प्रीएम्बल, द सेम वाज, विजन वाज द सेम, इट्स स्ट्रक्चर चेंज्ड। क्वेश्चन राइट्स ऑफ द मैन के ऊपर बेस है, आप इवेंट का कुछ भी मेंशन नहीं किया। एग्जैक्टली, सो नुआंस जो है वो उसके ऊपर कैसे वो मार्क करता है ट्रांजिशन, ठीक? तो वही गलती हो जाती है कि हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखा और हम सारा ही फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां उतार देते हैं, है ना? ये उसके अंदर जूम इन करके एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को आपको पूछना है, ठीक है? दैट इज व्हाट आई मेंट बाय स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेपोलियंस विक्ट्रीज ऑन द बैटलफील्ड वर शॉर्ट लिव्ड, बट हिज रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस लास्टेड मच लॉन्गर। डिस्कस नेपोलियन हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। Although Napoleon, अब इंट्रोडक्शन देखिए, although Napoleon is remembered as a military genius for defeating almost all major powers of Europe, his contribution as an institution builder was more durable. Napoleon had built a huge empire covering a large landmass of the continent, and every power of the day had to acknowledge his overlordship of continental Europe. But this empire melted away after the Battle of Waterloo. अब इमेजिन कीजिए कि ऐसा मिलिट्री जनरल राइज होता है जो विद इन अ स्पैन ऑफ अ डेकेड एंड हाफ, 15 साल के अंदर में वो पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप को अपने अंडर लेके आता है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज अंडर नेपोलियन। रशिया के साथ में सिर्फ फ्रेंडशिप थी, बट रशिया को भी दब के रहना पड़ता था। ब्रिटेन फाइट किया, सर्वाइव किया, बट देन इट वाज ऑलवेज थ्रेटेंड। सो फॉर 15 इयर्स नेपोलियन इज लाइक द बिगेस्ट दादा ऑफ यूरोप। लेकिन इतनी जबरदस्त दादागिरी उसकी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाकी रहते हैं। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स आउटलास्टेड। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स हमको देने पड़ेंगे। द मोस्ट फेमस अमंग्स दिस इज द नेपोलियनिक कोड।
लास्ट में हमने डिस्कस किया था नेपोलियनिक कोड. He implemented a code which brought in administrative uniformity across his entire empire. ये जो आइडिया है कोडिफिकेशन का, आज हमने कितने सारे कोड्स बनाए हैं. लेबर कोड्स आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, इंडियन पीनल कोड आप जानते हैं, सीआरपीसी आप जानते हैं. There are so many codes. How and where has this idea come from? It is Napoleon's contribution. So he implemented all these different laws into one single code so that there will be complete administrative uniformity across his empire. Got this idea? So it has outlasted him. It continued in France and world over people have used it. So his military victory is gone. Waterloo में हार गया, उसका empire खत्म हो गया, लेकिन उसका ये reform बाकी है ना, जिंदा है कि नहीं अभी? You're using it till this date also. And what are the other examples that we can give? Concordat with the Pope. ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था. 1801, he signs a sort of a peace treaty with Pope because during the revolution, revolutionaries were against Catholic Church and there were a lot of excesses committed. हमने डीक्रिश्चियनाइजेशन देखा था सोसाइटी का. अब वो सारी चीजों ने ऑफेंड किया था पोप को, राइट? एंड दिस लेड टू अ सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट. सो नेपोलियन सेटल्स दैट. और फ्रांस के अंदर में वंस एंड फॉर ऑल ये इशू सेटल हो जाता है कि यस, फ्रांस बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म, बट हम ज्यादा एक्सेस नहीं करेंगे अगेंस्ट कैथलिक चर्च. आपको जैसी आपकी सिस्टम चलानी है आप चला सकते हो, ओके, बट द स्टेट इज गोइंग टू बी सेक्युलर. So वो जो डिबेट था, डिस्प्यूट था, उसको नेपोलियन ने सेटल कर दिया, which continued later. So he has gone, but that settlement that he has brought about, that has outlasted him. Can you see that? ये हमने क्लास में डिस्कस की कि नहीं चीजें? ये दो चीजें तो आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है? और कुछ एग्जांपल्स. Other systems like Bank of France. नेपोलियन ब्रिटेन को हरा नहीं पाया, and Napoleon realized that it is Britain's economic might which has ensured its survival. तो जब तक मैं भी इंडस्ट्रियलाइज ना करूं फ्रांस को, तब तक आई कैन नॉट डिफीट ब्रिटेन. इट्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आई नीड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो ही बिल्ट अप बैंक ऑफ फ्रांस. देन ही ब्रॉट इन सिस्टम ऑफ प्रीफेक्ट्स. ही ब्रॉट इन अ कांसेप्ट ऑफ लीजियन डी ऑनर, जिसके अंदर में वो अलग-अलग फील्ड्स के, स्पेशली मिलिट्री के, बट अदर्स आल्सो, जो डिस्टिंग्विश्ड अचीवर्स थे, उनको वो ऑनर करते थे, ठीक है? दे वर गिवन, जैसे हमारे यहाँ पद्मा अवार्ड्स हैं, ठीक है? सो वैसा वो एक सोसाइटी के अंदर में स्पेशल रिकॉग्निशन स्टेटस नेपोलियन देता था. ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो है वो नेपोलियन के बाद में भी कंटिन्यू हुई डिस्पाइट हिज एम्पायर मेल्टिंग अवे. सो डू यू एग्री नाउ टू दिस आइडिया दैट यस, हिज मिलिट्री विक्ट्रीज वर शॉर्ट लिव्ड, बट हिज रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ दैट दे आउटलास्टेड, ठीक है? इसी को फ्रांस की हिस्ट्री में कहा जाता है दैट दे वर बिल्ट ऑन मासेस ऑफ ग्रेनाइट. उसकी मिलिट्री विक्ट्रीज शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन उसके रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं. सो दैट इज व्हाई दे कुड नॉट बी डिस्लॉज्ड. अब ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्जांपल हो गए, बट इन ऑल सब्जेक्ट्स ट्राई टू कलेक्ट सच फ्रेजेस. आईआर के अंदर में आप बात कर रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर में अगर आपको आंसर लिख रहे हैं, वहां पर अगर आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये कांसेप्ट लेकर आते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख दिया उसको, इट टेल्स द एग्जामिनर दैट यू आर अ पर्सन हु इज well read about the latest developments of that particular area. आपके आंसर्स को enrich करना है with such keywords and phrases. इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी टॉपिक वाइज इनको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? हे सगळं अगदी म्हणजे रटाळ वाटणारं काम वाटू शकतं. You know, you are picking up one thing at a time, writing it down. So boring. No? You'll not get everything in one place, okay? And you'll not get everything at the same time. But taking that pain, okay, to collect all of that and bringing in one place and then revising and re-revising, all of that boring stuff is going to give you a very interesting life later. Getting my point? Okay, so इस पर काम करना. I hope you got this answer. Everybody? Yes. Can you credit Napoleon for the unification of European nations, because he organized them in linguistic manner for their administrative convenience? For example, confederation of crime or the support of police state also. That later helped in unification of European countries. Okay, as an extended example, actually यहाँ पर मैं क्वेश्चन का जो टोन और टीम में देखेंगे तो ये फ्रांस स्पेसिफिक इसका फोकस है, और आप जो ये बोल रहे हैं इटली, जर्मनी और यहाँ पर हुए चेंजेस हैं,
एक सेंटेंस आप जरूर ऐड कर सकते हैं कि बाय एक्सटेंशन ये सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं था बल्कि और भी जगह पर है वो आपको उसका इफेक्ट दिखता है, बट दैट इज स्लाइटली टेंजेंशियल टू व्हाट द क्वेश्चन इज demanding. Next question. The irreconcilable interest of northern and southern states made a civil war inevitable. Irreconcilable means जिनको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, जिनके ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. इंटरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स मेड अ सिविल वॉर इनएविटेबल, अपरिहार्य. मतलब इनके इंटरेस्ट इतने डिफरेंट थे कि सिविल वॉर, गृह युद्ध जो है वो इनएविटेबल था अगर यूनियन को सर्वाइव करना है. क्वेश्चन बोल रहा है आपको इवैल्यूएट, इसका परीक्षण कीजिए. अब देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं. The American Civil War was primarily fought over the rights of the states. अब ये एक सेंटेंस आप देखिए, हमने कैसे स्टार्ट किया. The American Civil War. I told you that trick. Take the key of the question और उसी को फर्स्ट में आप लिख रहे हैं. American Civil War ब्रैकेट में period. Everywhere, if you can reflect this will really cast a good impression. History answers के अंदर में try to mention the periods. ठीक है. Even if you don't remember the exact years, not a problem. Around and tentatively, Napoleon, आप ये कह सकते हैं कि early years of 19th century, इतना तो हम याद ही रख सकते हैं, ठीक है. 1860s सिविल वॉर के लिए इतना तो हम याद रख सकते हैं. एग्जैक्ट ईयर्स ना भी याद रहे तो उसको ब्रैकेट में लेके लिखिए. इससे क्या होता है, आंसर्स में शार्पनेस आता है. Was primarily fought over the rights of the states. Southern states wanted to continue individual states' rights to practice slavery and hence seceded from the Union. The core reason behind this extreme measure was difference in economic models of the two regions and consequent conflicting interests. म्हणजे their respective models were so different that their interests were divergent and their interests were so divergent that there was a direct conflict. और ये conflict की वजह से ही secession और उसमें से civil war. ठीक है. तो अब देखिए तीन sentences के अंदर में हमने core of the question को कैसे यहाँ पर में डील करने की कोशिश की. अब आगे हम उसकी डिटेल्स बताते हैं. Then I tell you what is the model of the northern states, what is the model of the southern states, and you understand the difference of the two. और ये differences होने की वजह से consequently they could not stay together, put together, and that led to the civil war. That is the demand of the question. आ रही बात समझ में आप लोग को? Yes, no, can't say. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने कहीं भी अब्राहम लिंकन ऐसे लड़ा, ठीक है, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ, कोई चीज की जिक्र किया है नहीं, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर बोलते ही पहली चीज हमारे दिमाग में अब्राहम लिंकन आता है, ठीक है, और उनकी सारी लाइफ स्ट्रगल वो सब कुछ नहीं हमने मेंशन किया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वो नहीं है. क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक, उस पर हमने फोकस किया. व्हाट द आइडिया गाइस? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The creation of a united Italy and Germany was a strong blow to the Metternich system built after Napoleon's fall. Discuss. Creation of a united Italy and Germany was a strong blow to the Metternich system built after Napoleon's fall. Discuss. अब Metternich system से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अगेन सी क्वेश्चन का कोर क्या है? Metternich system को धक्का लगा, ये कोर है, हमने उसी से स्टार्ट किया. The Metternich system developed at Congress of Vienna under Austrian leadership was an attempt to uphold the old state system of Europe that existed before the French Revolution. France के revolution से पहले you had empires, you had old monarchies, and all of that had been destroyed or at least given a big blow by Napoleon. ठीक है, इसलिए नेपोलियन को सब मिलकर के हराते हैं, महाविकास आघाड़ी बनती है उनसे, and they come and defeat Napoleon. Naturally for what? Because they want the old system to continue. ठीक है, so Metternich system क्या करता है? ये उस पुरानी सिस्टम को फिर से बहाल करता है. अरे बात समझ में? और उस सिस्टम का कोर क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसको हम देखते हैं. But the birth of modern Italy and Germany based on nationalism struck a big blow to it. अब पुराना जो सिस्टम था that was based on empires, it was not based on idea of nationalism. I've discussed this at ample length in the class, so I don't think I have to repeat, or should I? Yes, no, can't say. अच्छा, okay, very quickly. देखिए during medieval times or before that in ancient times also,
might was right, and emperors used to expand their territory just by defeating others and amalgamating their areas into their respective empires. ऐसे empires बढ़ते चले जाते थे. Consequently, empires had many different kind of people living there. Ottoman Empire देखिए, उसके अंदर में टर्क्स भी हैं, उसमें अरब्स भी हैं, नॉर्थ अफ्रीकन्स भी हैं, उसके अंदर में ईस्ट यूरोपियंस भी हैं. अब ये तो हो गया रीजन वाइज. स्लाव्स भी हैं, उसके अंदर में अलग अलग रेसेस हैं, उसके अंदर में अलग अलग रिलीजन्स हैं. सो एम्पायर्स वर अनविल्डी कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. ओके, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में आते हैं तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कॉन्टिनेंटल यूरोप में इंट्रोड्यूस होता है. ओके, व्हाट इज नेशनलिज्म? फीलिंग ऑफ वननेस इन अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. फ्रेंच भाषिक लोग हैं हम एक हैं. हम इटालियन भाषिक हैं, हम एक हैं. जर्मन भाषिक हैं, हम एक हैं. या हम स्लाव रेस वाले हैं, हम एक हैं. बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पीपल फील दे आर वन. और जब भी ये भावना आ जाती है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, ये नेक्स्ट चीज को अनलॉक करती है. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? डिमांड फॉर नेशन स्टेट्स. आर यू समझ में? एंड नेशन स्टेट की आइडिया एंड एम्पायर की आइडिया, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग. ठीक है, आर यू समझ में आपको? सो गॉट द डिफरेंस नाउ. ओके, नाउ मेटरनिक सिस्टम किसको अपहोल्ड कर रहा है? अर्लियर सिस्टम्स. नेशन स्टेट्स उसके खिलाफ में जा रही आइडिया. नाउ मेटरनिक सिस्टम से लड़ झगड़ करके इटली और जर्मनी क्रिएट होते हैं 1870. 1815 से मेटरनिक सिस्टम है, 1870 में जाकर के इटली और जर्मनी बनते हैं. सो दिस इज लाइक द बिगेस्ट ब्लो टू द मेटरनिक सिस्टम. उसको एक चॅलेंज को उसने टेक ऑन किया सक्सेसफुली. आणि एकदा पायंडा झाला, वन्स द प्रेसिडेंट इज सेट, then it is easier for others to follow. What the German nation did, what the Italian nation did, other nations are also going to feel we can also do it. The Poles will try for it. Okay, other Slav races will try for it, and many new nation states will be born in Europe after that. और आज जो हम दुनिया का बेसिस है हमारा, we have 193 nation states ना UN. ये base on which IR is organized today, that has come because of it. But this, had it not been for success of Germany and Italy, perhaps this idea would not have taken root. Got it? And that is the core or focus of the question. कि कैसे इस इवेंट ने जर्मनी और इटली के बनने में इंस्पायर किया और बाकी दूसरे नेशंस को टू क्रिएट देयर ओन नेशन स्टेट्स. ये फ्लो ऑफ हिस्ट्री है. What is it? This is the flow of history. आइडियाज कैसे चेंज होते चली जाती है. एम्पायर्स का दौर खत्म हो गया, नेशन स्टेट्स का दौर शुरू हो गया. दैट इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन. इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो फिर बाकी उसी का इलैबोरेशन आंसर देता हूं. व्हाट द कांसेप्ट नाउ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आइडिया. द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लाइज एट द कोर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. इवैल्यूएट. क्या बोल रहा है क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमको? कि एक्चुअली बहुत सारे कॉजेस हैं वर्ल्ड वॉर के, लेकिन इसके सबके कोर में ऐसा सगळ्यांचा गाभा काय है? तो इट इज राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की वजह से. अब इसका हमको परीक्षण करना. वर्ल्ड वॉर 1 अगेन देखिए, पीरियड 14 to 18. The most catastrophic war unto that point was fought mainly due to forces unleashed by nationalism. जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एट द कोर इज नेशनलिज्म. अब क्राफ्टिंग ऑफ द वर्ड्स देखिए कैसे हम इसको यहां पर में लिख रहे हैं. It was fought mainly due to the forces unleashed by nationalism. राष्ट्रवाद ने इन चीजों को इग्नाइट किया, स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होता है. अब कैसे वो करता है, किन चीजों को करता है, इसको हम आगे देखेंगे. The idea of nationalism was consecrated in continental Europe by the French Revolution. अमेरिकन्स ने दिखाया था ना उनका नेशनलिज्म. अमेरिकन्स का इंग्लैंड के अंदर में इंग्लिश लोगों का राष्ट्रवाद है. दे हैव देयर ओन नेशन स्टेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. ठीक है, सो दैट इज देयर. बट कॉन्टिनेंटल यूरोप में ऐसा नहीं है. कॉन्टिनेंटल यूरोप में दिस आइडिया इज ब्रॉट बाय द फ्रेंच पीपल हु क्रिएट देयर सेपरेट फ्रेंच नेशन स्टेट. It energized many nations to fight for creation of their own respective nation states. And soon we see that Europe is transformed, and towards the close of 19th century, French Revolution 1789 to 99, मतलब 18th century का एंड ही है, और 19th century में फिर यूरोप में ट्रांसफॉर्मेशन हुई. और 19th century जब खत्म हो जाती है, we see that ये राष्ट्रवाद, ये नेशनलिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है
into a militant or virulent form. पहले जो राष्ट्रवाद था, it was only about creation of nation states. नेशन स्टेट्स बन गए, इटली बन गया, जर्मनी बन गया, और भी स्टेट्स बन गए, ग्रीस पैदा हो गया अलग से 1830s में, बेल्जियम बन गया, हॉलैंड बन गया, नेदरलैंड बन गया. All of these are born now. So now it leads to the next. वो गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कब निकले. Once one idea or one dream is unlocked, then the next one ठीक होना रहेगा. Okay? Once you have a nation state, then after that the next thing that nations will want is they will want more international prestige. Okay? जर्मन्स का लोहा पूरी दुनिया में माना जाना चाहिए, ये कैसर विलियम का गोल होगा. अब ये कैसे माना जाएगा, उसके कुछ मेजर्स हैं, कुछ यार्डस्टिक्स हैं. ब्रिटेन को क्यों पूरी दुनिया में माना जाता है? बिकॉज इट हैज such a massive colonial position. So Germany will also now go after colonies. Italy will also go after colonies. Colonies बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? You need military might. आपको strong navy चाहिए. All of these countries will start. This will bring them into conflict with one another. आपस में conflicts होंगी. Germany also wants Morocco. France also wants it. Italy wants Corsica. France also wants Corsica. Conflicts. अब इन कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस. ठीक है, ये सब चीजों की वजह से यूरोप जो है वो एक टिंडर बॉक्स में बन जाता है. इट इज ओनली अ स्पार्क दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्लोजन टू टेक प्लेस. ऑल द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 आर बिकॉज ऑफ दिस नेशनलिज्म. ये स्टेटमेंट आपको कनेक्ट करने के लिए होगा. Are you getting this or no? Okay. Do you have the note in your group? Has it been shared with you in the group? Is there? Okay. So आप थोड़ा सा इस आंसर को quickly, इसके कंटेंट को आप एक बार पढ़िए, so that it becomes easier for you to relate with it further. Okay, so let's take the next question. Yes. Even the World War I triggered because Serbian nationalists killed Austrian Yes. nationalism community. Yes, that is the immediate cause. Okay, that is a trigger or event. But before that, had all of these things not been stacked, had Serbia not had an alliance with Russia, Serbia had an alliance with Russia, so Serbia called Russia to itself, Austria called Germany to itself, then Germany attacked France because Britain, France and Russia are into alliance. All of this is a process of 40 years. Getting this? And that is one small event. That event got all of these things going. Getting this? So all of that 40 years was the history from 1870 till the start of World War I. That is what is expected. What do you mean? सर, पर यहाँ पर ऐसा पूछा कि बिस्मार्क की पॉलिसी कैसे जिम्मेदारी को आंसर कराना होता है और कैसे विलियम की केस में जाना होता है, वो कैसे डिफरेंशिएट करना की मतलब वही है कि तीनों का एक कंट्रीब्यूशन हुआ है. नहीं, अब कैसे है ना कि देखिए, आपने बिस्मार्क की पॉलिसी बोला. बिस्मार्क की पॉलिसी क्या थी? बिस्मार्क की पॉलिसी वाज वेरी डिफरेंट. बिस्मार्क की पॉलिसी वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जिम्मेदार हम बोल ही नहीं सकते. बिस्मार्क की पॉलिसी थी कि जर्मनी इज अ सैटिएटेड पावर. ये उसका अपना कोड है. जर्मनी एक तृप्त आत्मा है. ठीक है, उदय भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास. सो बिस्मार्क न्यू कि अगर मैं यहाँ ज्यादा एम्बिशियस हो जाऊंगा तो फ्रांस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो कुछ हमने गेन किया वो हम सब कुछ खो सकते हैं. बिस्मार्क वाज अ मास्टर डिप्लोमेट. सो बिस्मार्क का सारा फोकस था यूरोप में फ्रांस को आइसोलेट रखना और जो ये हमको सेंट्रल यूरोप में पोजीशन मिली है इसको एंजॉय करना.
बाकी दुनिया भर में जाकर के चीजें करने की जरूरत नहीं है हमको, वी आर नॉट एट दैट स्टेज। इस पर से कैसर विलियम और बिस्मार्क की डिफरेंसेस होते हैं। कैसर विलियम वांट्स अ डिफरेंट, ही सेज कि देखो अपने पास में आर्थिक इकोनॉमिक अभी हमारे पास में पावर आ गया है, हमारे पास में नेशन स्टेट है, हम लोग महान लोग हैं, सो व्हाई शुड वी रिमेन अ सैटिस्फाइड पावर? इंस्टेड हिज पॉलिसी इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स। So he kicks out Bismarck in 1890 and embarks on his policy after that, and that is what leads to this World War I. So Bismarck की पॉलिसी अलग है और कैसर विलियम की अलग है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैसर की पॉलिसी कैसे, हाँ, ये कैसे करना, तो एक क्वेश्चन बल्कि इस तरीके से पूछा भी जा चुका है कि कितना जो है वो जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। तो यस डेफिनेटली कैसर विलियम का जो ये डिससैटिस्फैक्शन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ही वेंट अबाउट लुकिंग फॉर कॉलोनीज, और वो सारी प्रोसेस जो ब्रिटेन और फ्रांस ने 400 सालों में कंप्लीट की थी, कैसर विलियम चाहता था कि वो 40 साल में हो जाए, जो नहीं हो सकती। एंड व्हेन दैट डिड नॉट हैपन, ही स्टार्टेड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड हिज फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली ट्रिगर्ड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। सो वो अप्रोच ही अलग हो जाएगा, उसका पूरा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। ठीक है, सो नुआंस जो है ना, इसलिए स्कोप वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कोप को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, political unrest and economic dislocation post World War I led to rise of fascism and Nazism. Discuss. Okay. Fascism और Nazism ये modern political philosophies हैं, इंटर-वॉर पीरियड के अंदर में ये पैदा होती हैं respectively in Italy and Germany. कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको? The catharsis of inter-war period, ब्रैकेट में हमने लिखा period 19 to 39, led to a serious challenge to democratic systems in the form of virulent ideologies of Nazism in Germany